Hello, mathematicians. In this session, we will cover some more properties of sets. Okay, so our first topic is empty set. In my earlier videos, I have covered what is a set. So again, I'm summarizing it. Set is a well-defined collection of objects. Okay, तो empty set का मतलब क्या हो सकता है? Empty means खाली. Okay, it is empty. It means set में क्या होता है? Objects होते हैं. सेट में या तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वी कैन कॉल देम ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स और मेंबर्स. ओके, तो अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैन वी कॉल इट अ एम्प्टी सेट? Yes, we can call it an empty set. In fact, an empty set is defined like that only. A set which does not have any element. It is also called a void set. इसको void set भी बोलते हैं. एक एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, this is a set where X is a student of class 11th. Okay, and दूसरा सेट है X is a student studying in class 10th and 11th. So let's decide which one of them is an empty set. Obviously, इसमें it is a collection of all students of class 11th, right? That is fine. But B is a collection of all students studying in class 10th and 12th, which is empty because there cannot be any students studying in two classes at a time. Okay, so that is why कोई भी set empty set तब होता है जब उसमें कोई element ना हो. So let's also see how this is represented. How is a empty set represented? So an empty set is represented by 5. This symbol is used to denote an empty set, or we can also denote it by two curly braces. Okay, so let's look at some examples of empty sets. For example, this is x, 1 is less than x less than 2. X is a natural number. Okay, तो हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 सो ऑन. ठीक है, अब x लाइज बिटवीन 1 एंड 2. इट मीन्स कि 1 और 2 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर है? देयर इज नो नेचुरल नंबर. 1 और 2 के बीच में रियल नंबर्स तो हैं, जैसे 1.1 1.2 1.3. 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं. ठीक है, बट कोई नेचुरल नंबर नहीं है. 1 के बाद जो नेचुरल नंबर आता है वो होता है 2. सो दैट इज वाई there is no natural number between 1 and 2. और क्योंकि ये strict, this is called strict inequality. It means x is not equal to 1. ना ही x 1 हो सकता है, ना ही x 2 हो सकता है. It has to be strictly between 1 and 2. Okay, that is why there is no element in the set and this is a void set. Second example is this: x square minus 2 equals to 0 and x is rational. Okay, it's a rational number. ये हमारा एग्जाम्पल है. एंड इसके रूट्स क्या होंगे? बेसिकली x is a rational number and x square minus 2. Basically it is all such x which satisfy this equation. Okay, अगर x square minus 2 equal to 0 है, इसका मतलब ये कि x इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है एंड x एक रैशनल नंबर है. तो इसके रूट्स क्या है हमारे पास? x is प्लस माइनस √2. अब ना तो √2 रैशनल है और ना ही माइनस √2 रैशनल है, और यही दो रियल नंबर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं. सो ऐसा हमारे पास कोई रियल नंबर, कोई रैशनल नंबर नहीं है दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन. दैट इज व्हाई दिस इज एन एम्प्टी सेट. ओके, so next example is, for example, this is a set x square is equals to 4 and x is odd. Okay, and x is odd.
तो इसके लिए हमें इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। ओके, अगर x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो लेट्स सी, पहले हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। x² इज 4, इट मींस x इज +-2। अब ना ही +2 ऑड है एंड -2 is again, that is a negative integer, so we don't talk of that. So it is not this equation is not satisfied by any of the odd values of x, so therefore D is an empty set. Okay, so this empty set, I think this is very clear. Empty means खाली, जिसमें कोई element नहीं है. So the set which does not have any element is called an empty set. Okay, let's move on to our next property or next type of sets, which is finite and infinite sets. अब फाइनाइट का मतलब क्या है? अगेन ये जो टर्म्स है ना, इनकी डेफिनेशन इनके नाम से ही है. तो फाइनाइट का मतलब है इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. और इनफाइनाइट का मतलब है इसमें indefinite number of elements है. Okay, a set which is empty, note that phi is also empty set और phi is also a finite set because उसमें कोई element नहीं है. So but still this is a definite set. Okay, so finite का definition है a set which is empty or consists of definite number of elements. तो फाइनाइट सेट्स में कौन से सेट्स काउंट होते हैं? वन इज एम्प्टी सेट, अ सेट विच इज एम्प्टी, या फिर वो सेट्स जिनके एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज डेफिनेट. ओके, दे आर कॉल्ड फाइनाइट सेट्स. अदरवाइज it is an infinite set. Okay, otherwise it is infinite. So let's take some example of finite sets. Okay, so let's say A is all such x such that x² is equals to 4. Okay, and x belongs to z. Again, when I am writing this belongs to sign, please watch my earlier video for that, where I have defined this notation belongs to. This is a set. If x is an element of z, we write x belongs to z. Okay, so it means it is a collection of all integers such that x² is equals to 4. So here we have, if we write it in roster form, it will be -2 and 2. Okay, so this set is definite. Okay, and if I say A is all such x such that x is a natural number. Okay, if I write it in roster form, it will be 1, 2, 3, and this is a never ending set. Okay, it can go up till infinity, so we write it by using 3 dots. Infinite sets are usually written, some of 2 or 3 elements will be written, and then we denote write 3 more dots to denote infinite number of elements. Okay, so next point is, can we write every infinite set in roster form? No, because we cannot represent the set of real numbers in this form, because elements of the set do not follow any particular form. Real number can be anything. Okay, if I talk about R, the set of real numbers, real number कुछ भी हो सकता है, and हम इसको roster form में नहीं लिख सकते. Okay, okay, so now let's take some examples of finite and infinite sets also. Let's quickly go through some examples. First is all such x such that x belongs to n and x minus 1 and x minus 2 is equals to 0. We have to tell whether it is a finite or an infinite set. Okay, तो ये set है which consists of all such elements such that x has to be a natural number. Okay, एक तो x natural number होना चाहिए और वो इस equation को भी satisfy करे.
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है इसके सिंपल रूट्स निकालने हैं हमें, और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रूट्स निकालने हैं और फिर चेक करना है कि कौन से रूट्स नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, तो इसके रूट्स हैं 1 and 2। एक्चुअली इसका सॉल्यूशन यही है रोस्टर फॉर्म में। तो these are, you can count these elements and these are definite, so this is a finite set. Next example is x, all such x such that x belongs to n, basically x is a natural number, and एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसका हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है -2 and 2। ओके, एंड इसमें से नेचुरल नंबर इज 2 ओनली। तो ये सेट अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा, एंड देयरफॉर एक ही एलिमेंट है, सो दिस इज फाइनाइट। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल है ऑल सच x such that x belongs to n and 2x minus 1 is equals to 0। ओके, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? दिस इज लाइक x is 1/2। ओके, तो इसका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक ही रियल नंबर है विच इज 1/2। ओके, बट वी आर गिवन सेट ऑफ ऑल नेचुरल्स दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर एक ही इसका रूट है विच इज 1/2 विच इज नॉट नेचुरल। तो हमारा ये जो सेट है वो एक एम्प्टी सेट हो जाता है। तो दिस इज स्टिल फाइनाइट। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन थी एनी एम्प्टी सेट, ओके, or any set that consists of definite number of elements is called finite, otherwise it is infinite. So let's take another example. All such x such that x belongs to n and x is odd। okay, तो हमारे पास odd natural numbers no doubt हैं। okay, तो ये क्या numbers होंगे? 1 is odd and it is also a natural number, 2 is even, so that is not a member of this set, 3 is odd and it is also a natural number, so this is 1 3 5 7 and then 3 dots because this is a never ending set। okay, so this is an infinite set। जहां पर भी हमें 3 dots लगाने की जरूरत पड़े, that is an infinite set, and any infinite set that is a set that does not contain definite number of elements। okay, so our next topic for today is equal sets। okay, तो अभी तक हमने पढ़ा सेट्स के बारे में। ओके, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन, हाउ डू वी रिप्रेजेंट द सेट्स, हाउ डू वी रिप्रेजेंट द मेंबर्स ऑफ द सेट और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट। देन वी स्टडीड एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी इक्वल सेट्स। ओके, अब दो सेट्स को हम इक्वल कब बोलते हैं? ओके, अगर मान लो कोई एलिमेंट एक सेट में प्रेजेंट है और वो दूसरे में भी प्रेजेंट है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन ए, देन इट इज, दोनों में एक ही एलिमेंट्स होंगे ना। इक्वल का मतलब ये है कि दोनों में एक एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स है। ठीक है, सेट की जब हम बात करते हैं तो इन माय फर्स्ट वीडियो आल्सो आई सेड दैट सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, रिपीटेड एलिमेंट्स मैटर नहीं करते हैं। वी ट्राई टू अवॉइड राइटिंग द रिपीटेड एलिमेंट्स। ओके, तो जब हम बात करते हैं इक्वल सेट्स की, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट ऑल सच एक्स, उनका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकता है, such that x is a vowel and I write it as all such a e I o u। so a and b are equal sets because इसमें तो खैर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, एक रोस्टर फॉर्म में लिखा है। ओके, बट जनरली व्हेन डू वी से दैट टू सेट्स आर इक्वल? if every element of first set is present in second set and every element of second set is also present in the first set, then we say that the two sets are equal। so basically two sets are equal if they have exactly the same elements। okay, so let's take examples of equal sets now। suppose ये एक सेट है एंड ये एक सेट है। in my first session on this topic
I said कि जो repeated elements है वो matter नहीं करते हैं. A set does not change if one or more elements of the set are repeated. Okay? तो ये set अगर मैं repeated elements remove कर दूं तो मेरे पास और order does not matter. मैं 1 को पहले लिखती हूँ, 2 को मैं repeated element remove करके 3 को भी remove करके I get this set. So A and B are exactly equal. तो दो sets तभी equal होते हैं जब उनमें exactly same elements हों. Okay? Now we have to find the pair of equal sets, okay, and we have to tell whether they are equal or not. For example, A is 0, B is x greater than 15 and x is less than 5. C is all such x minus 5 is equals to 0. Okay, let's take these four sets. D is x such that x square is 25. Let's take these four sets. तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, इसके एलिमेंट्स को देखूं तो 0 इज द ओनली एलिमेंट. b को अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूं तो आई विल गेट all such x such that x is greater than 15 and x is less than 5. Is that possible? No, there's no number which is both less than 5 and greater than 15. ऐसा कोई नंबर नहीं है. So b is basically an empty set. And c को अगर मैं simplify करूं, all such x such that x minus 5 is 0. So this is basically 5. The only element is 5. And d is all such x such that x square is 25. तो इसमें दो numbers आएंगे, दो integers आएंगे, -5 and +5. ओके, तो अगर मैं देखूं इनमें से पेयर ऑफ इक्वल सेट्स कौन से हैं, आई डोंट थिंक इसमें कोई इक्वल सेट है. तो A and B is an empty set. A consists of 0, so they are not equal. A and C, they are also not equal. A and D are also not equal. Okay, so none of the pair is we are not able to find out any of the equal sets pair. Okay, so this ends our session on sets for today, but we will discuss some more topics on sets like subsets. Okay, subsets of R as intervals. Okay, so subsets is a very important topic. So far, to summarize, we have studied definition of sets, representation of sets, roster and set builder form. Okay, और उसके बाद हमने देखा कुछ important notations. How do we write the set, notation of writing a set, how do we write A belongs to a set, an element belongs to a set. Okay, then we studied empty set, finite set, infinite set, and last was equal sets. And in the next session we will study subsets, power set and universal set. So watch out for more videos.